Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you're all well. Dr. Likawarman from Ireland. Topic of today's video is overview of higher specialist training, especially under RCPI. So I'll be addressing the training and faculty of RCPI who has opened the higher specialist training since 7th of October and the last date is 14th of November. The same dates the application open for the basic specialist training under RCPI. As you already know that I have made a comprehensive guide and complete guide for the basic specialist training pathways because it suits more to the international doctors, especially from Pakistan and other countries which have an opportunity, who have the opportunity to apply directly to the basic specialist training as a job opportunity. Instead, the higher specialist training is very competitive for them to approach and to qualify for it. इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स करूंगा कि हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो आयरलैंड के अंदर लोग ऑलरेडी मौजूद हैं इनके लिए क्या पाथवेज हैं फर्दर प्लान ए प्लान बी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज एक मेरे कॉलीग ने कांटेक्ट किया कि जस्ट जो नए लोग आए हैं एज अ रजिस्ट्रार स्टैंड अलोन पोस्ट के अंदर जिनको पीएचडी मिली है जिनको नहीं मिली इन द लॉन्ग रन उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनको क्या प्लान्स जेन में रखने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन specialities. So RCPI has four training bodies and faculties. They look after general pediatrics, general internal medicine, and histopathology and obs and gynae. Or in key applications open, I'll go directly to the RCPI higher specialist training website and I'll show you that how you can go and have a look. And it is, I think, your duty to go and have a look each and everything yourself as well. You need to know what to look in the site and the things that are more relevant to you. और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक अ बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग. सम बेसिक डिफरेंस विच विल आई हाईलाइट कि आप बेसिक ट्रेनिंग अगर कंप्लीट करते हैं आयरलैंड के अंदर, देयर टू pathways. Either you have a recognition of the training from the overseas country, which I made a video a few months ago, that they opened a new pathway to recognize the training of the overseas. If it is a structured training and is fulfilling the criteria, अगर आप चाहें या लिखें recognition the prior training RCPI, you will find all the policy और उसको आप रिव्यू करें and then you will see that if you fulfill that criteria और जिन लोगों ने जमा कराई है और जिनको लोगों को अवार्ड हुई है, they can directly apply for higher specialist training and they have an exemption to the basic specialist training in their relevant specialty. Or the rest of the people, they have to complete the basic specialist training to approach the higher specialist training. इसके अलावा कोई पाथवे नहीं है. It is a run through program और या तो आपको equivalence चाहिए या आपको exemption चाहिए basic specialist training की, then you can go to higher specialist training, या आपको PhD करने के बाद higher specialist training में जाना पड़ता है. और equivalence के लिए बी जो इनका पाथवे है वो हमें सूट नहीं करता. वो स्पेसिफिक जो इनके अंदर डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज हैं लाइक सर्जरी, एमरजेंसी मेडिसिन के अंदर जिसने पीएचडी किया है वो उसके मुताबिक उसको इक्विवेलेंस दे देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं इफ़ दे फील कंफर्टेबल और वट एवर इट इज़. और द अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इवन बहरीन, वहाँ की जो ट्रेनिंग है अगर वो हो तो उनको पीएचडी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देते हैं. मगर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर ट्रेनिंग ये एक डिफरेंट चीज़ है, इससे आपको पीएचडी एक्सेम्पशन का सर्टिफिकेट मिलता है. ये दो टर्म्स you need to keep in mind. There's another way to approach the higher specialist training. Let's see, for example, there's a scenario that you have done a basic specialist training in Ireland either through equivalence or through recognition of prior training, or you actually took the BST post. Now, what are the options for you in different specialties? So there are two options for you. Number one option is that you definitely apply and you have an eligibility to apply for the higher specialist training if you have completed the MRCPA exam before the application or before I think the start of the rotation, which is July 2025. Number one. Number two, अगर आप उसमें unsuccessful होते हैं, you have another option which is an alternate pathway, which is I have worked a lot on that as well, and it is a structured pathway, recognized pathway through the medical council. Basically, medical council of Ireland give you a certificate which is CSDPathway. अगर आप गूगल पे जाकर लिखें CSDPathway RCPI, सारी गाइड आपको मिल जाएगी. सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलिस्ट डिवीजन पाथवे, सारी गाइड आपको मिल जाएगी. कौन सी रोटेशन कहाँ पर रिकॉग्नाइज है, दे हैव अ हेल्प डेस्क एज वेल. सो थिंग्स आर देयर
and they are well structured now, and you need to make your own portfolio, and you need to submit your portfolio and rotations as the medical council will give you a guide and a pack. You need to do such rotations and submit to them, and they will award you a specialist registered certificate, which is recognized internationally. This is a CST certificate as compared to CCST or CST certificate, which they are trainees uh, who go from formal training pathway through higher specialist training, which get, and the alternate pathway trainees, they get CST certificate. After that, you can work as a consultant, you can compete as a consultant. There is no discrimination in a way that if you have done hard work on your portfolio, on your achievements, on your academic achievements, on your awards, qualifications, and other things, so you will be competing after that alternate pathway or formal training pathway based on your CV, based on your qualifications, based on your competencies, based on interview for the consultant post. तो ये सारी myths हैं to disappoint you कि अगर आप alternate pathway कर रहे हैं तो उसकी कोई worth नहीं है. ये सारी myths हैं. Don't even put a deaf ear on that. मैंने ये सारा कुछ खुद किया और this is acceptable even UK के अंदर, और हर तरफ कोई discrimination नहीं है. Discrimination इवन स्किन कलर की बेस पे होती है हर तरफ, चाहे आपने ट्रेनिंग की है या अल्टरनेट पाथवे से की है, दूसरी की है. इट एग्जिस्ट, इज नेचुरल, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मिडिल ईस्ट में भी रिकॉग्नाइज्ड है. सो लेट्स सी प्लान ए, अप्लाई फॉर हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग. इफ यू हैव कंप्लीटेड BSc ट्रेनिंग विद MRCP, और इफ यू हैव एग्जाम्पशन थ्रू पाकिस्तान, तो योर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इन पाकिस्तान BSc एग्जाम्पशन, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर. अच्छा, HST आपको मिल जाती है, ठीक है. नहीं मिलती, यू हैव अ प्लान बी. यू शुडंट वरी अबाउट, यू कैरी योर प्लान. You are doing a registered post, request a medical council pack and work on that. These are two things I want to guide you for that panic नहीं होना आपने, अपनी रोटेशन कंप्लीट करें और everything counts. और अगर पोर्टफोलियो है, इवन जो लॉग बुक अभी आपको मिलती है आपकी पोर्टफोलियो NER पोर्टल के ऊपर, यू कैन मेंटेन दैट एज वेल. बाकी अगर वो नहीं मेंटेन कर सकते तो मेडिकल काउंसिल से जो आपको पैक मिलता है वो बड़े सिंपल से पेपर्स हैं, हर रोटेशन के एंड पे उसको साइन कराएं और मूव फॉरवर्ड. और डेफिनेटली डोंट बी होपलेस एंड डोंट लेट द डिसअपॉइंटमेंट कम नियर टू यू. ये सबसे बड़ी बात है. एवरीथिंग काउंट्स हियर इंशाल्लाह. अच्छा, मैं आपको साइट पे लेके जाता हूँ हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की और दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन क्या है. सेम गाइडेंस, सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एवरीथिंग, जस्ट some brief differences. ये if you go on that page, high specialist training, ये आ जाता है RCPI. और इसमें अगर आप राइट साइड पर जाएं, HST एंट्री गाइडेंस एडवाइस, और इसको अगर आप क्लिक करें, then you will see these 4 guidance documents, and this is all what is HST. और एप्लीकेशन खुली है, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली. एंट्री रिक्वायरमेंट्स are same as I mentioned. You do BSc with the MRCPI complete, you have, or BSc exemption or BSc equivalence, whatever it is, I have already explained. Then English requirement I already explained to you. Same for BSc requirement जो कि इनकी है. Allocation of training places same, I already made a video for the BSc. अच्छा, equivalence के ऊपर मैंने आपको बता दिया. You can yourself click it and have a look, but आप इस पे फिट नहीं होते. ये है स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया, UK और न्यूजीलैंड और बहरीन के लिए. पाकिस्तान के लिए RPT है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर ट्रेनिंग, जो कि आप उस 2 महीने पहले आपने अप्लाई करना था, एंड देन यू आर गिवन एक्सेम्पशन. अच्छा, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट गाइडेंस, ये देखें, मैंने कल इस पे वीडियो बनाई थी BSc के लिए. सेम चीज़ वही, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है. यू नीड टू कीप रेडी BSc सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन MRCPI, यू नीड टू कीप इट रेडी. और मेडिकल काउंसिल की एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन सेम, वही सारी चीज़ें रिपीट. इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपने रेडी रखनी है. पासपोर्ट आइडेंटिटी रेडी रखनी है. स्टैम्प फॉर इफ यू आर होल्डिंग इट. अच्छा, in लिखेगा applicants are not able to supply their BSc certificate at the time of application due to outstanding program requirements, MRCPI result, e-portfolio incomplete, pending. वो कहते हैं अगर आप कर रहे हैं, आपका MRCP complete नहीं है, बट आपने एग्जाम दे दिया हुआ है, तो you don't need to provide that, they will look after, you can provide later. अच्छा, इस पे नीचे जाएं, आरिश मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एडवाइस, ये उन्होंने दी है. जाएं, अगर आप इस पे चले जाएं
तो आपको वो सारी एप्लीकेशन आरिश मेडिकल काउंसिल खुल जाती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो क्वेश्चन फिल करें एंड देन पाथवेज आपके लिए खुल जाते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली इंशाल्लाह, हाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ बाय गोइंग थ्रू द साइट, होल साइट ऑफ द IMC इंशाल्लाह वन डे, मे बी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आई विल मेक दैट। अच्छा, इसके बाद आप ये रिकग्निशन पर ट्रेनिंग खुल गया, ये अच्छा ये आ गया एप्लीकेशन इंटरव्यू स्कोरिंग। I made a video already yesterday for BSD because there was only 4 specialties. Now after basic specialist training आप सब स्पेशलिटी में चले जाते हैं। पीड्स के अंदर आप पीडियाटिक्स चलें, पीडियाटिक्स कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी कर सकते हैं, पीडियाटिक कार्डियोलॉजी, 3 स्पेशलिटी सब स्पेशलिटीज़ हैं। और बाकी मेडिसिन के अंदर लाइक यू कैन सी लॉन्ग लिस्ट, ईच हैज़ अ डिफरेंट इंटरव्यू स्कोरिंग ब्रेकडाउन। RCPI की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दी है। लेट्स से इफ़ यू क्लिक ऑन टू दैट कार्डियोलॉजी वन, तो आप देखें इसके अंदर मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू से पहले, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस, टीचिंग अवार्ड, हायर डिग्रीज जो भी है, पब्लिकेशन ऑडिट्स अगर आपके हैं, मैंने आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट कि कितने कितने मार्क्स होते हैं। 1 मार्क्स होता है प्रेजेंटेशन का, क्लिनिकल प्रैक्टिस, अच्छा लीडरशिप मैनेजमेंट अगर आपने कोर्स किया एंड यू हैव बीन NCHT लीड, जो कि इधर हॉस्पिटल के अंदर एक आपको एक दिया जाता है, और हॉस्पिटल कमेटी मेंबर्स हैं, कोई इस तरह की लीडरशिप का एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, दैन टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन इन टीचिंग वगैरह, कोई MSc आपने की है, वो PG सर्टिफिकेट किया है, टोटल आपके 20 बनते हैं। तो यही डिफरेंस बनाते हैं। देन CV के 15 मार्क्स हैं, वेरी गुड। कैरियर टू डेट आपने एकेडमिक अचीवमेंट CV बिल्ड की है, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट शो की है। नॉलेज के आपको कहेंगे गो थ्रू योर CV, 15 मार्क्स उसके देंगे। नॉलेज, स्पेशलिटी, रिसर्च, पब्लिकेशन, इसके ऊपर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे भाई। 100 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स। सो एवरी स्पेशलिटी यू कैन सी हैज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इसको देखें, लिस्ट ऑफ स्पेशलिटीज़, अगर आप वीडियो को स्टार्ट से देखें देन यू विल सी वेयर टू गो। बेसिकली सारी ब्रेकडाउन स्कोरिंग हुई है एंड दिस इज़ ऑल। आई थिंक द लास्ट डेट इज़ 17 नवंबर। और स्टार्ट में आपको हाई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। उस पेज को अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको थर्ड जो राइट बार कोड्स हैं उसमें आपको जाना HST इंटरव्यू, तो आपको सारी गाइड मिल जाएगी। फर्दर they are conducting online sessions in the same way for BST. You can attend that and you can ask further questions. So basically, in summary, for those doctors who are working in Ireland on a standalone post, has completed MRCP and working as a registrar, I think if there is a plus minus, if they want to go for BST, they have an enthusiasm to go for BST, apply for BST, go again for the SHO post and come back again, and after BST again go to the competition of HST. Let's see, hope for the best. But if you're dedicated enough and you have done another training in FCPS or MD, something else, you have an option of alternate pathway, and there should not be any disappointment on that. But you should check with the medical council, the registration section. They will send you a pack, and you can also csd@rcpi.ie email है, और लिखें CSD RCPI Google पे, you will find all the information about the certificate of specialist region pathway. It has same recognition. It is all your CV, your academic achievement, your professional qualification, your professional development that matters at the end. Certificate आपको उस level तक ले जाएगा कि you can apply for a consultant and you can have recognition as a consultant anywhere, UK, Australia, New Zealand, and even the Middle East through that pathway as well. The choice is yours. मैंने खुद कोई BST नहीं की, मैंने तो बल्कि कैंपेन्स की हैं BST की एग्जाम्पशन और इक्विलेंस के लिए, और सारी चीज़ों के लिए मैं 2 स्टेज से गुजर के आगे निकल गया, एंड थिंग्स अप्रूव्ड फॉर माई जूनियर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और उसके बाद मैंने कोई HS नहीं की, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए। मैं लड़ के 5 साल इस तरह गुजार दिए कि हमें BSc एग्जाम करो, और BSc एग्जाम हुई। अभी आके रिकग्निशन प्रायर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानीज के लिए स्टिल हम कह रहे हैं कि जो इधर रजिस्ट्रार करते हैं उनके लिए भी करो।
but they have their own protocol. But there should not be any hopelessness. आप काम कर रहे हैं, if you're working in a teaching hospital, you are sharing the same rota, same schedule as your trainee, teaching trainee. complete करें, CST pathway के साथ complete करें, फिर उसके बाद fellowship कर लें, UK में जाके CV अपनी build करें, अपने special interest develop करें. As per demand, you will be hired inshallah. अपना ख्याल रखें, और if you want to have any further guidance session on alternate pathway, please let me know. I will inshallah make proper sessions on the alternate pathway, how to make the portfolio, especially for the UK one. I have done the UK one. It's very important, like a Caesar pathway and CSD pathway in Ireland, both are same, but UK is very structured. Anyways, best of luck for all those who are applying for higher specialist training, for the basic specialist training. Inshallah, make yourself hardworking person, a passionate person, enthusiastic person, and enlighten the name of your country. और यही चीज़ें आपको आगे जाके फ़ायदा देंगी. अपना ख्याल रखें जी. अल्लाह हाफिज़.